Dear students, today we will discuss about combinations of resistances. Combination of resistances. To get required resistance, or needed resistance with the help of available resistances, the combinations of resistances are required when some we have some specific order of resistances, and we need to get some specific resistance. Then we combine resistances can be combined in three manner. Resistances are combined in three manner: series combination, first series combination, second parallel combination, and third mixed combinations. To get required resistance, we combine different resistances in different manner according to our need. First, series combination. What is series combination? The combinations of resistances in which each resistance is connected at the end of second resistance, or each resistance is connected in series, or after connection they form a series, is known as series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है. रेजिस्टेंसेस का ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर प्रत्येक रेजिस्टेंस के एंड में सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड कनेक्ट होता है, जिसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस के सेकंड एंड पर सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, सेकंड रेजिस्टेंस के एंड पर सेकंड एंड पर थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट लास्ट एंड पर सेकंड एंड पर फोर्थ रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड सो ऑन. इसी तरह से बाकी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दी जाएं, देन दे फॉर्म ए सीरीज ऑफ रेजिस्टेंसेस. इस तरह से हम यदि एक के बाद एक से दूसरे को दूसरे एंड से, तीसरे को तीसरे एंड के एंड से चौथे को कनेक्ट करते जाएं, फोर्थ को कनेक्ट करते जाएं, तो इस तरह से रेजिस्टेंसेस एक सीरीज बनाएंगे और इस तरह का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है. तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन विच दे फॉर्म ए सीरीज, एंड व्हेन potential difference is applied across this series, then current will be same on each resistance, while potential difference is different, and it is according to individual resistance, and it is equal to, or it depends on individual resistance. The combination of resistances in which flow of current is same, while potential difference on each resistance is directly proportional to its resistance, is known as series combination. In series combination, the second ends of each resistance is attached with the first end of next resistance. तो in series combination रेजिस्टेंसेस का ऐसा कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन विच सेकेंड एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंसेस इज कनेक्टेड with the first end of next resistance, and after connection they form a series of resistances is called series combination. या सेकेंड वे में हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कि सभी रेजिस्टेंसेस पर करंट इक्वल होता है, एक समान पोटेंशियल यदि करंट एक समान होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस उनके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होते हैं. रेजिस्टेंसेस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें
करंट फ्लो करने पर, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर उनमें फ्लोइंग करंट सेम होता है, ईच रेजिस्टेंस से फ्लोइंग करंट विल बी सेम, बट potential difference is directly proportional to the individual resistance. It means potential difference on individual resistances will be different, while current will be same on each resistances which is connected in the series combination. Series combination, the combinations of resistance in which second end of each resistances is connected with the first end of next resistances and so on. Then they form a series of resistances, and such type combination is called series combination. एक definition ये है, या second definition, the combinations of resistances in which they form a series, and when potential difference is applied across this combination, then current is same on each resistances, but potential difference is directly proportional to its individual resistance. So potential difference is different on each resistance according to their resistances. Now what will be equivalent potential of series combination? Now we consider n resistors of resistance, n resistor. तो यहाँ पर रजिस्टार्स एंड रेजिस्टेंसेस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टार्स माने प्रतिरोध होगा और रेजिस्टेंसेस उनकी वैल्यू को शो करेगा. नाउ कंसीडर एन रजिस्टार्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एन रजिस्टार्स of resistances R1, R2, R3 dash Rn is connected in series combination when potential difference V is applied across this combination, then current I flows in this combination. Then current I is flowing in this combination. If potential difference on individual resistances are V1, V2, V3 dash Vn up to Vn, then according to Ohm's law, V1 is equal to I into R1, V2 is equal to I into R2, V3 is equal to I into R3, and so on, and Vn is equal to I into Rn. Since V1 equal to I into R1, V2 equal to I into R2, V3 equal to I into R3, Vn is equal to I into R1. These potential difference on individual resistances of R1, R2, R3, Rn. If equivalent potential difference of this combination BV, suppose, are considered, equivalent potential difference of this series combination is represented by capital V, then according to Ohm's law, resistance potential difference V is equal to I into R, where R is equivalent resistance.
since total current equivalent resistances of this combination is R, so V should be equal to I into R. So V should be equal to I into R. Again we know that potential difference is a scalar quantity. Potential difference is a scalar quantity, so V will be equal to V1 plus V2 plus V3 plus and so on and up to Vn. Now substitute value of V and V1 to Vn. We get I1 R1 plus I2 R2 plus I3 R3 and so on I into Rn. Now take out common I from right side, sorry I होना था ये I R1 plus R2 plus R3 up to Rn. I is cancelled by I, then we get R is equal to R1 plus R2 plus R3. So equivalent resistance of series combination is equal to sum of individuals of resistances which are connected in series combination. ये था एक छोटा सा क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एन रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के लिए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें डिफाइन करना, हमने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस का सेकंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड होता है और एंड सो ऑन, और बाकी सभी भी इसी तरह कनेक्टेड होते हैं। चूंकि वे एक सीरीज को फॉर्म करते हैं, इस तरह से कनेक्ट करने पर वे एक सीरीज को फॉर्म करते हैं, इस कारण से सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस combination, then equal current flows on each resistances connected in the series combination, but potential difference across each individual resistances are different because and it is proportional to their resistances. Series combination एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंसेस के प्रत्येक रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को नेक्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट किया जाता है और इसी तरह से बाकी रेजिस्टेंसेस भी कनेक्टेड होते हैं। और ऐसे कॉम्बिनेशन को कि जब दोनों बोथ एंड्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लोइंग करंट है वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी में इक्वल करंट फ्लो होता है, लेकिन रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हैं। चूंकि रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस विल बी डिफरेंट। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया। अब वो कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए डेरिवेशन फाइंड आउट करो। तो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये लिखना है कि कंसीडर एन रेजिस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 up to Rn are connected in series combination when potential difference V is applied across this combination, then current I flows in the series. If due to current I potential difference of individual resistances became V1, V2, V3 dash Vn,
then according to Ohm's law, its value should be V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 equal to IR3, so and up to Vn equal to I into Rn. But now again, if equivalent resistances of this combination, टोटल अलग अलग डिफरेंट रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 को कंबाइन करने पर यदि ये टोटल रेजिस्टेंसेस कितना बनाते हो, कैपिटल R के इक्विवेलेंट करते हो, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, ये टोटल रेजिस्टेंसेस को हम सिंगल सिंबल R से रिप्रेजेंट करें, अर्थात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस कॉम्बिनेशन का R हो, तो V शुड बी इक्वल टू करंट इज I एंड total potential difference V should be equal to I into R. But we know that total potential difference, applied potential difference is equal to algebraic sum of potential difference of circuit. क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और जितना सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंसेस रेजिस्टेंसेस पर का एल्जेब्रिक सम के माने इक्वल होना चाहिए, जो जितना अप्लाई किया है उतना ही सर्किट में होगा, और इन सब पर जो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है यदि उनको सम कर दिया जाए वो टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए. तो हमने कहा सिंस वी नो दैट वी पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी शुड बी इक्वल टू algebraic sum of potential difference of this circuit. So V1 plus V2 plus V3 dash Vn. Substitute value of V to Vn, we get IR1 plus IR2 plus IR3 is dash plus IRN. R into I, take out common I, then we get R1 plus R2 plus R3 dash Rn. तो I को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I से I कैंसिल हो जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 तो प्लस Rn. तो ये हमारा n रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस हुआ. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज algebraic sum of connected individual resistance. Equivalent resistance of any series combination, equivalent resistance of any series combination is always equal to algebraic sum of individual resistances which is connected in the series combination. It means when we take a series combination of resistances, then resistance is increased, resistances are increased, and its value is always equal to sum of resistances of series combination which is connected in the series. ये एक क्वेश्चन था. इसी क्वेश्चन को कई बार देता है कि if you have 3 resistances and it is connected in series, then find out equivalent resistance. तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी क्वेश्चन को n के प्लेस पर हम 3 कर देते हैं और क्वेश्चन को n के लिए इसलिए बताता हूं कि n से 3 लाना इजियर है. हमने कहा ठीक है हम 3 कर देते हैं. तो हमने वहां कंसीडर कर लिया कि कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू R1, R2, R3 are connected in series combination. When potential difference V is applied across this combination, then current I flows in this combination. If potential difference due to flowing current I became V1, V2, V3, V1, V2, V3. So according to Ohm's law, V1 is equal to I into R1, V2 is equal to I into R2, V3 is equal to I into R3. If equivalent resistance of this combination is R. Now suppose equivalent resistance of this combination is represented by capital R, then total potential difference V of this circuit will be equal to
I into R. Now again, since applied potential difference is always equal to sum of individual potential difference, because potential difference is a scalar quantity, so V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now substitute value of V and V1 V2. So I R is equal to I into R1 plus I into R2 plus I into R3. Now take out common I. R is equal टू, ये हमने ले लिया यहाँ से I कॉमन, ये I आ गया, इसके डिनोमिनेटर में R1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू R1 2 प्लस R3 और I से I कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू algebraic sum of resistances which is connected in series combination. Now if n resistances are connected in series, n equal resistances are combined in series combination, then we get equivalent resistances will be, since question says R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to Rn is equal to, हम ले लेते हैं R डैश, तो n टाइम्स सम हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू n इंटू R डैश. जब R डैश को हम n टाइम्स सम करेंगे तो 1 1 1 5 टाइम्स करो तो 5 1 इंटू 1 हो जाता है, 2 2 5 टाइम्स सम करो तो 5 इंटू 2 हो जाता है. तो जब R डैश को n टाइम्स सम करेंगे तो n इंटू R डैश. इसका मतलब है कि यदि इक्वल रेजिस्टेंसेस ऑफ R डैश आर कनेक्टेड in series combination, then equivalent resistance of that combination will be n times of given value of resistance. यदि हम इक्वल वैल्यू R डैश के रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस दिए गए रेजिस्टेंस का n टाइम्स हो जाता है, n गुना हो जाता है. तो मतलब यहाँ पर यह है कि सामान्य जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि सीधा सीधा बोला कि 4 ओम के 4 जोड़ दिए गए सीरीज में, या 4 ओम के 100 रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड किए गए, देन व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 इंटू 100 400 ओम. 4 ओम के 100 कंबाइंड हुए तो कितना हो गया 400 ओम. एन की वैल्यू 100 और आर डैश की वैल्यू 4 ओम, तो डायरेक्ट निकाल दो. ये तो हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन. सेकंड कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन विच both ends of resistances, one end of each resistances is connected with a single point or single node, while second end of resistances are connected second point of circuit. When each resistances are connected such type, its first end is connected with one point and second end is connected with another point, then resistances are called in parallel combination. In parallel combination, when potential difference is applied across this combination, then potential difference of each individual branch or each individual resistance is equal, but current is inversely proportional to resistances. The combination of resistances
in which potential difference is same on each individual resistances, but current is inversely proportional to the resistance is known as parallel combination. ठीक है, the combination of resistances in which potential difference of series and each resistances is same, while current on each resistance depends on the value of resistance. In parallel combination, one end of each resistance are connected with one end, while second end of each resistance is connected with second end of circuit, another end of circuit. Then combination is known. दोनों को कंबाइंड, दोनों डेफिनेशन को कंबाइंड करके लिखो, परफेक्ट डेफिनेशन बनती है कि द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस in which one end of each resistances is connected with one point of circuit, while second end of resistances are connected another end of circuit. And when potential difference is applied across this combination, then potential difference is same on each individual series or resistances, while current is inversely proportional to their equivalent resistance. This type combination is called parallel combination, या फिर सिंगल भी लिख सकते हो कि the combination of resistances in which one end of each resistance is connected with one point of electric circuit, while another end of second end of resistances are connected with another point of electric circuit. So this type combinations is called parallel combination. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? ऐसा रेजिस्टेंसेस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंसेस का एक एंड सर्किट के एक पॉइंट से और सेकंड एंड अनदर पॉइंट से कनेक्ट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है. ऐसे कॉम्बिनेशन में जब हम इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसमें प्रत्येक के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है. प्रत्येक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस या सीरीज यदि इसमें लगी है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, लेकिन जहां पर जैसे ही जंक्शन ए पर करंट आएगा तो करंट अकॉर्डिंग टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस डिवाइड